Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can use my Gmail ID. Links are given in the description box. Today we are going to deal the last chapter of class 10 physics, that is sources of energy. This is the first part of this chapter, and in this chapter we are going to deal all the conventional sources of energy. So the very first topic we are going to deal here is what is sources of energy. ठीक है, sources of energy से हम लोग क्या समझते हैं? Okay, a sources of energy is one which can provide adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time. ठीक है, sources of energy means adequate amount of energy. ठीक है, proper amount of energy जो हमें बहुत लंबे समय तक energy provide करे. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं sources of energy. There are two types of sources of energy: non-renewable sources of energy, and second one is renewable sources of energy. For example, non-renewable sources of energy are coal, petroleum, gas or natural gas we can say. ठीक है, ये सारे जो है non-renewable sources of energy है. They cannot be replenished or they cannot be renewed again and again. So they are called non-renewable sources of energy. Second one is renewable source of energy. For example, biomass, hydroelectricity, these are the form of energy which can be renewed again and again in the environment. ठीक है, इन सारे एनर्जीज को जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनको हम एनवायरनमेंट में बार बार रिन्यू करके और इसे रीयूज कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इफ वंस कोल इज फिनिश्ड फ्रॉम द अर्थ surface, then we cannot use it again and again. We cannot make it again and again because coal formation of coal is a very long process. ठीक है, कोल को बनने में बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं. हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे फॉर्म करते हैं. Now let us define what is non-renewable sources of energy. So those sources of energy which have accumulated in nature over a very long time and cannot be quickly replaced when exhausted are called non-renewable sources of energy. ठीक है, वैसे एनर्जी जो हमारे नेचर में बहुत लंबे समय से प्रेजेंट है, अवेलेबल है और उसे हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते. अगर एक बार वो खत्म हो जाए, when exhausted we cannot replace it. ठीक है, एक बार अगर वो खत्म हो जाए तो हम लोग उसको फिर से रिप्लेस नहीं कर सकते. That type of energy, that sources of energy are called non-renewable sources of energy. They are also called exhaustible sources of energy as once they finish in the environment. ठीक है, एक बार वो खत्म हो जाएंगे तो दोबारा वो चीज हम लोगों को नहीं मिल पाएंगे. For example, we can see here fossil fuel. In the form of fossil fuel, we can see coal, petroleum, and natural gas or nuclear fuel. ठीक है, ये सारे जो है हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. वी कैन सी इन द पिक्चर कोल, natural gas and nuclear energy. These are the examples of non-renewable sources of energy. Renewable sources of energy, those sources of energy which are being continuously produced in nature. ठीक है, वैसे एनर्जीज, वैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो नेचर में कंटिन्यूअस प्रोड्यूस हुए जा रहे हैं, मींस दे कैन नॉट एग्जॉस्ट. ठीक है, वो खत्म नहीं होंगे, वो हमेशा प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिसाइकिल हो रहे हैं. Those energies, those sources of energies are called renewable sources of energy. They are also called inexhaustible sources of energy because वो कभी खत्म नहीं होते. वैसे sources of energy जो कभी खत्म नहीं हो, उसको हम लोग आसानी से replace कर सके, उसे हम लोग बोलते हैं renewable sources of energy. For example, forest, wind energy, solar energy. ठीक है, forest होते हैं, wind energy होते हैं, solar energy होते हैं. ये सारी चीज जो है हम लोग को फिर से बहुत इजीली अवेलेबल होता है. वी कैन प्लांट फॉरेस्ट 25 to 30 इयर्स, फिर से हम लोग एक नया फॉरेस्ट जो है वो उगा सकते हैं. इट डजंट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स. ओके, विंड एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, these are the example of renewable sources of energy.
अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर कोई एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं तो किस तरह की एनर्जी को हम लोग बोलेंगे कि इट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और इट इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सो लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज which shows that the energy is a good source of energy. It should produce a large amount of work per unit mass. ठीक है, वो कम से कम मास में, कम से कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा वर्क जो है वो प्रोड्यूस करे। ओके, द सेकेंड प्रॉपर्टी which shows that an energy is a good source of energy that it should be cheap and easily available। ठीक है, कोई भी फ्यूल जो है अगर इजीली अवेलेबल नहीं है या फिर हमको वो महंगा लग रहा है, मींस दैट इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। मींस अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मस्ट बी cheap and it should be easily available to us. Third one is it should be easy to store and transport. Okay, तो स्टोर करना भी आसान हो और ट्रांसपोर्ट करना भी इजी हो, तो वो हमारे लिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। द फोर्थ पॉइंट इज इट शुड बी सेफ टू हैंडल एंड यूज। ओके, अगर हम लोगों ने कोई ऐसा फ्यूल हमारे घर में है दैट इज नॉट सेफ टू हैंडल एंड यूज, मींस दैट इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। द फिफ्थ पॉइंट इज व्हिच शोज दैट an energy is good source of energy is it should not cause environmental problem, मींस किसी भी तरह का पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करे। तो ये है जो हमारा एलपीजी गैस है जो हम लोग अपने अपने घरों में यूज करते हैं, दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और फ्यू मोर एग्जांपल वी कैन सी हियर इज tidal energy, wind energy, solar energy, hydroelectricity, geothermal energy, biomass energy. These are the good sources of energy and these are also called renewable sources of energy. ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल है दैट इज एलपीजी गैस, इट इज आल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें भी सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोगों को मिल जाते हैं, मीन्स वो बहुत सारा वर्क पर यूनिट मास भी उसका बहुत हाई है। ठीक है, इट इज आल्सो चीप एंड इजीली अवेलेबल एलपीजी गैस। इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यस, एलपीजी गैस को हम लोग बहुत इजीली स्टोर भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इट शुड बी सेफ टू हैंडल, ओके, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं बट इट इज सेफ टू हैंडल। It should not cause environmental problem. Okay, burning of LPG do not cause any environmental problem. So we can see that LPG is also a very good source of energy. Now, what is fuel? What do we mean by fuel? Okay, the material which are burned to produce heat energy are known as fuel. ओके, वैसा मटेरियल जो जिसे हम जलाकर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करें उसे हम लोग फ्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, कोल, कुकिंग गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा, दीज आर फ्यूल्स। ओके, ये सारे जो हैं फ्यूल्स है। हियर वी कैन सी द एग्जांपल। ओके, वुड इज आल्सो हियर, कोल, कुकिंग गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, हियर वी कैन सी कैंडल इज आल्सो हियर। ये सारे फ्यूल्स हैं। फ्यूल्स क्या होता है? वैसे मटेरियल जिसको हम लोग जला करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करें, दोज आर कॉल्ड फ्यूल्स। ओके, सिंपल फ्यूल की डेफिनेशन है द मटेरियल व्हिच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, अगर हम लोग फ्यूल की बात करें तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग स्किप नहीं कर सकते। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड by burning a unit mass of fuel। ठीक है, 1 किलोग्राम अगर फ्यूल को जला करके जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यूनिट मास मींस 1 ग्राम 1 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, अगर हम लोग 1 ग्राम की बात कर ले तो हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं कि अगर हम लोगों का 1 ग्राम एलपीजी गैस जो है वो बर्न करते हैं तो हमें 50 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी मिल रही है। तो उस केस में क्या होगा कि we will say that the calorific value of LPG gas is 50 kilojoule per gram। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो तरह से कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल कंप्लीटली। ठीक है, वो फ्यूल जब कंप्लीटली बर्न करेगी और उसके बाद जो है जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। ओके, द सेकंड डेफिनेशन इज the amount of heat produced by burning 1 gram of fuel completely
ओके, इज कॉल्ड इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। किसी भी फ्यूल का अगर हम लोग 1 ग्राम को बर्न किए और उस 1 ग्राम को बर्न करने के बाद जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। ओके, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग calorific value is kilojoules per gram. Okay, it is represented as kJ per G. Okay, now let us see different calorific value of different fuels. Here we can see the calorific value of wood. ठीक है, लकड़ियों को जलाकर करके 1 ग्राम लकड़ी को जलाए तो वो कितना हो जाएगा, 17 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट वन इज इफ वी बर्न 1 ग्राम ऑफ एलपीजी गैस देन वी प्रोड्यूस 50 किलो जूल of energy, and if we burn a charcoal then we produce 33 kilojoule per gram। ठीक है, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ चारकोल जो है दैट इज 33 किलोजूल पर ग्राम। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स के जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है वो चेंज होती है, मीन्स हम लोग उसको जलाकर, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द एलपीजी गैस इज हाईएस्ट देन ऑल अदर, मीन्स वुड और चारकोल के कंपैरिजन में जो कैलोरिफिक वैल्यू है एलपीजी गैस की दैट इज द हाईएस्ट। नाउ लेट अस सी कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ different substance, different material. Okay, so the very first here is dung cakes. Okay, cow dung cakes जिसे बोलते हैं। Okay, तो उपला we can say, तो उसको बर्न करने के बाद जो है 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम, 1 ग्राम उपले को हम लोग अगर बर्न करेंगे, काउडन केक को बर्न करेंगे तो उसमें 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम जो है हम लोगों को उसकी कैलोरिफिक वैल्यू मिलती है। ओके, वुड इफ वी बर्न 1 ग्राम ऑफ वुड देन वी गेट 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, 1 ग्राम वुड को अगर हम लोग जलाते हैं तो 17 किलो जूल एनर्जी हम लोगों को मिलती है। नेक्स्ट इज कोल, if we burn 1 gram of coal then we get 25 to 30 kilojoule of energy। ठीक है, 1 ग्राम अगर कोल को हम लोग बर्न करें तो 25 to 30 किलोजूल की एनर्जी हम लोगों को मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज चारकोल, इफ वी बर्न 1 ग्राम ऑफ चारकोल देन वी गेट 33 किलोजूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, किलोजूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग अगर 1 ग्राम चारकोल को बर्न करते हैं तो 33 किलोजूल की एनर्जी हम लोगों को मिलती है। इफ वी बर्न 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल then we get 30 kilojoule of energy. If we burn 1 gram of diesel then we get 45 kilojoule of energy. If we burn 1 gram of kerosene oil then we get 48 kilojoule of energy, and if we burn 1 gram of petrol then we get 50 kilojoule of energy। और भी चीजें यहाँ पे, बायोगैस, if we burn 1 gram of biogas then we get 35 to 40 kilojoule of energy। If we burn 1 gram of natural gas then we get 33 to 50 kilojoule of energy। ओके, कुकिंग गैस जिसे हम लोग एलपीजी बोलते हैं, अगर 1 ग्राम एलपीजी को हम लोग बर्न करेंगे तो हम लोगों को कितनी एनर्जी मिलेगी, 50 किलोजूल की एनर्जी मिलेगी। एंड इफ वी बर्न 1 ग्राम ऑफ मीथेन देन वी गेट 55 किलोजूल ऑफ एनर्जी। एंड एट लास्ट इफ वी बर्न 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस देन वी गेट 150 किलोजूल ऑफ एनर्जी। Next, characteristics of an ideal fuel. Okay, what are the different characteristics which makes a fuel ideal? So the very first character is it should have high calorific value। ठीक है, calorific value high है means the fuel is very good, it is ideal to use। Next criteria is it should burn without giving out any smoke or harmful gases। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है दैट उस फ्यूल से स्मोक और हार्मफुल गैसेस नहीं निकलने चाहिए। सपोज वी आर बर्निंग वुड तो उसमें क्या होता है, उसमें स्मोक भी निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस भी निकलते हैं, मींस इट इज नॉट एन आइडियल फ्यूल। थर्ड वन इज it should have proper ignition temperature। What is an ignition temperature? The temperature at which a substance start burning, a fuel start burning। ठीक है, जितने टेम्परेचर पे, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोगों को वुड को बर्न करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे केरोसिन ऑयल डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें मैच स्टिक से आग लगाएंगे। ओके, तो उसकी इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हाई है। बट इफ वी हैव टू लाइट द गैस, एलपीजी गैस, तो उसमें एक छोटी सी चिंगारी होती है और उससे वो आसानी से फायर कैच हो जाता है जो हमारे गैस स्टोव्स होते हैं। मींस इग्निशन टेम्परेचर ऑफ
fuel is fuel should have proper ignition temperature. It means that कि उड की जो ignition temperature है वो बहुत high है और LPG गैस की ignition temperature that is very low. ठीक है, वैसे टेम्परेचर जिसपे कोई भी फ्यूल जो है वो बर्निंग शुरू कर देता है दैट इज इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, तो एलपीजी गैस की अगर हम लोग बात करें तो उसकी इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है. इट मींस इट इज द प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. और उड की जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसको बर्न करने में. सो द third characteristic of ideal fuel is it should have proper ignition temperature. Next one is it should be cheap and easily available. ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडियल फ्यूल का मींस वो सस्ता भी होना चाहिए और आसानी से हम लोगों को अवेलेबल भी होना चाहिए. द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर. ठीक है, हैंडल करना भी आसान होना चाहिए, सेफ ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए और स्टोर करना भी बिल्कुल कन्वीनियंट होना चाहिए. मींस दीज आर द प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल. और इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग मैच करें मींस एलपीजी कैन बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. ठीक है, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी आई है 50 किलो जूल पर ग्राम. ओके, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस व्हाइल बर्निंग. ठीक है, उसकी इग्निशन टेम्परेचर भी प्रॉपर है. इट इज चीप एंड ऑल्सो इजीली अवेलेबल टू अस एंड ऑल्सो it is easy to handle, safe to transport and convenient to store, but थोड़ा precautions लेना होता है. Now the topic comes here is conventional sources of energy. Now let us see what is conventional sources of energy. The traditional sources of energy which are familiar to most people are called conventional sources of energy. ठीक है, वैसे sources of energy जो traditional बहुत समय से चला आ रहा है, जैसे for example we can take पेट्रोलियम, कोल. ठीक है, कोल जो है बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल. ठीक है, कुकिंग फ्यूल के लिए भी हम लोग यूज करते हैं कोल. नेचुरल गैस, ये सारे जो है ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मींस दे आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हियर वी कैन सी द डायग्राम, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस. ये सारे जो है वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और ये बहुत सारे लोगों को फेमिलियर है. ठीक है, ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी व्हिच आर फेमिलियर टू मोस्ट पीपल आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स. ओके, अ नेचुरल फ्यूल formed deep under the earth from a prehistoric remains of living organism is called fossil fuel. ठीक है, बहुत समय पहले जो है बहुत सारे जो प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो बर्ड हो गए थे अंदर, जमीन के अंदर जो है वो दब गए थे. और जब ऊपर से प्रेशर और हीट हुआ, वी कैन सी इन द डायग्राम कि कैसे ही हमारा जो कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो जो है बर्ड हो गए अंदर, जमीन के अंदर धंस गए. और उसके बाद जो प्रेशर और हीट जब उन पे पड़ा, ठीक है, तो वो कार्बोनाइज होकर के और कोल या पेट्रोलियम में बदल गया एंड दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. ठीक है, नाउ लेट अस नो हाउ फॉसिल फ्यूल्स वेर फॉर्म्ड. द प्लांट्स एंड एनिमल्स which died millions of years ago were gradually buried deep in the earth and got covered with sediments like mud and sand away from the reach of oxygen or air. In the absence of oxygen, the chemical effect of pressure, heat and bacteria converted the buried remains of the plants and animals into fossil fuels like coal, petroleum, natural gas. ठीक है, ये क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, ठीक है, वो बर्ड हो गए. अगर कोई अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई लैंडस्लाइड हुआ तो वो अचानक से वो अर्थ के अंदर बर्ड हो गए और उसके बाद उसके ऊपर जो है सेडिमेंट्स जैसे मड, सैंड, ये सारी चीजें जो है उसके ऊपर कवर कर दी उन लोगों को बर्ड कर दी, उन लोगों को अंदर जो है वो कवर करके. और विदाउट द रीच ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन और एयर वैसा कुछ नहीं पहुंचा. और जो केमिकल इफेक्ट हुआ अर्थ के अंदर प्रेशर और हीट की वजह से, ठीक है, तो प्रेशर, हीट और बैक्टीरिया वो सारे बर्ड रिमेन्स को क्या किए, वो लोग फ्यूल्स में बदल दिए एंड दैट फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. हियर वी कैन सी
यहाँ पे जो प्लांट्स है, यहाँ पे प्लांट जो है वो बरिड हो गए अर्थ के अंदर, और वो रोटिंग वेजिटेबल मैटर, हीट एंड प्रेशर, हीट एंड प्रेशर, कोल इस तरह से फॉर्म हुआ, ठीक है। रोटिंग वेजिटेबल मैटर जो है वो हीट एंड प्रेशर की वजह से पहले पीट बने, पीट इज द फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। फिर उसके बाद हीट और प्रेशर और हुआ तो वो नीचे में अंदर में जाकर क्या बन गए, कोल बन गए। Here we can say, see here, here is the example of formation of petroleum, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स थे वो लोग क्या हुआ कि अंदर में समुद्र के अंदर जो है वो बरिड हो गए, और उसके ऊपर जब वाटर का प्रेशर और टेम्परेचर मिला, हियर वी कैन सी, तो वो क्या हो गया, फिर उसके बाद वो लोग फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कोल, ठीक है। आज हम लोग सारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन, ठीक है। कोल क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ फ्री कार्बन के भी, ओके। A lot of heat energy produced during the burning of coal which make it a good fuel, ठीक है। बहुत सारे एनर्जी जो है, बहुत सारी एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं, which makes it a very good fuel, okay। Types of coal, there are 4 types of coal, that is pit, lignite, bituminous, anthracite, ठीक है। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कोल है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इनका जो कैटेगरी है डिवाइड हुआ है। मींस पिट जो है इट विल कंटेन 60% ऑफ कार्बन, lignite will contain 70% of carbon, bituminous will contain 80% of carbon, और जो anthracite है it is the best quality of coal which contain 90 to 95% of carbon and it also burn without producing smoke, ठीक है। एंथ्रासाइड जो होता है ये बिना स्मोक प्रोड्यूस किए जो है ये बर्न करता है, ओके। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कोल। Coal is used as a fuel for heating purposes in homes and industries, ठीक है। कोल्स का हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर हीटिंग पर्पसेस इन ऑल्सो इन होम, ऑल्सो इन इंडस्ट्रीज, ये सारे जो है यूज होते हैं। सेकंड यूज इज कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सबसे दूसरा यूज जो है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूज, दैट इट इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्ड यूज इज कोल इज यूज टू मेक कोक, ठीक है। कोक बनाने के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूल गैसेस लाइक कोल गैस, ठीक है। फ्यूल गैस जैसे कोल गैस को हम यूज करते हैं, तो कोल गैस बनाने के लिए भी कोल का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट यूज इज इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस, ठीक है। कोल का यूज हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस को भी यूज बनाने में यूज करते हैं। नाउ द सेकंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज पेट्रोलियम। The crude oil, petroleum, is a complex mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbons mixed with water, salt and earth particles, ठीक है। पेट्रोलियम क्या होता है, ये मिक्सचर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। which is all the hydrocarbons are mixed with water, salt and earth particle। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट जो हमारा मिक्सचर है पेट्रोलियम में मिक्स्ड है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आल्सो मिक्स्ड विद सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन सच एज कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कुछ मेटल्स भी इसमें मिक्स्ड होते हैं। ये क्रूड ऑयल का ये सारा जो है हम लोगों का पार्ट्स है, या फिर हम लोग को बोल सकते हैं मिक्सचर है जो क्रूड ऑयल मिलकर के बनता है। मींस इट इज द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। नाउ वी विल सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ओके। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पहले क्या है, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स अस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस which can be used as fuel, ठीक है। सबसे पहले जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर डिवाइडेड, ठीक है। जितने भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पे क्या, एलपीजी गैस, पेट्रोल जिसको हम लोग गैसोलीन भी बोलते हैं, ओके, डीजल, केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल, ब्यूटामिन, पैराफिन वैक्स, नेप्था,
ठीक है, वी कैन सी हियर डायग्राम, यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम लोग पेट्रोलियम को या क्रूड ऑयल जो हम लोगों को मिलता है उसे हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम लोग हीट करें तो हम लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट मिलती है। मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पे वी गेट एलपीजी और पेट्रोलियम गैस, 25 to 60 degrees Celsius we get gasoline, 60 to 180 degrees Celsius we get naphtha, 180 to 220 degrees Celsius we get paraffin, 220 to 250 degrees Celsius we get diesel, 250 to 300 degrees Celsius we get fuel oil, 300 to 350 degrees Celsius we get lubricating oil, 350 degree and above. Now petroleum gas. Liquefied petroleum gas consists mainly of butane which has been liquefied by applying pressure. ठीक है, liquefied petroleum gas इसलिए हम लोग बोलते हैं because it is liquefied by applying pressure and its calorific value is 50 kilojoule per gram. ठीक है, इसकी calorific value जो है वो 50 kilojoule per gram. Here we can see the liquefied petroleum gas and different uses of liquefied petroleum gas. हम लोग सबसे पहले इसे cooking gas की तरह use करते हैं घरों में. ठीक है, next one is advantages of LPG. What are the different advantages of LPG? So LPG has high calorific value, that is 50 kilojoule per gram. सबसे पहला example जो हमारा advantage है, that is it has high calorific value. LPG burns with a smokeless flame, so does not cause air pollution. ठीक है, it is also smokeless flame. It also produce smokeless flame. ठीक है, इसमें कोई air pollution होने की chances नहीं है. So it is also advantageous to us. So third point is LPG does not produce any poisonous gas on burning. ठीक है, पहले तो ये smoke भी produce नहीं करता है, smokeless flame produce करता है. दूसरा जो है does not produce any poisonous gas on burning. LPG is easy to handle and convenient to store. Means all the properties which are shown by LPG are the properties of an ideal fuel. LPG is very neat and clean domestic fuel. ठीक है, very neat and clean domestic fuel and we can use it very easily and it is easy to handle and convenient to store. Means LPG is an ideal fuel, we can say it. The third conventional sources of energy is natural gas. Natural gas consists mainly of methane, that is CH4, with small quantities of ethane, propane. Okay, natural gas में जो main component होता है, that is methane, and also it contains ethane and propane. Natural gas occurs deep under the crust of earth, either along or along with oil above the petroleum deposits. Natural gas is formed under the earth by decomposition of vegetable matters laying under the water. ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा जो natural gas होता है वो अर्थ के अंदर vegetable या फिर और भी जो organic matters होते हैं उसको decompose होने की वजह से इस तरह से rocks के बीच में जो है gas deposit हो जाता है, that is called natural gas. ठीक है, this decomposition is carried out by anaerobic bacteria. ठीक है, जितने भी वेजिटेबल पील्स होते हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो जब अर्थ के अंदर जाते हैं तो एनारोबिक बैक्टीरिया उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और दे प्रोड्यूस नेचुरल गैस. Uses of natural gas. Now let us see what are different uses of natural gas. The very first use is natural gas is used as domestic and industrial fuel. ठीक है, घरों में भी हम लोग इसे फूड बनाने प्रिपेयर करने के लिए डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज करते हैं. Natural gas is used as fuel in thermal power plant for generating electricity. ठीक है, फ्यूल की तरह हम लोग जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं नेचुरल गैस को. Compressed natural gas is being used increasingly as the fuel in transport vehicle. CNG गैस हम लोग यूज करते हैं. compressed natural gas हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, बसेस या और भी व्हीकल्स को चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं compressed natural gas. Advantages of natural gas. So the very first advantage is natural gas being a complete fuel in itself can be used directly for heating purposes in homes and industries. Okay, natural gas is a complete fuel. ठीक है, और इसे हम लोग हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं होम और ऑफिस में. नेचुरल गैस इज गुड फ्यूल because it has a high calorific value. Okay, natural gas का जो calorific value है वो बहुत high होता है, that is 50 kilojoule per gram. Third advantage is the great advantage of natural gas is that it can be supplied directly from gas to well. ठीक है,
वेल से डायरेक्टली ये होम या फैक्ट्रीज को ये ट्रांसफर होता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस एंड दिस एलिमिनेट्स द नीड ऑफ एडिशनल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि ये गैस वेल से डायरेक्टली होम या ऑफिस को ट्रांसफर होता है, होम या फैक्ट्रीज को ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन, और इसकी वजह से जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस होता है वो बच जाता है। That's all for the video today. If you have any doubt, any confusion, any problem related to the video, you can comment in the comment section or you can write using my Gmail ID. Thank you very much for watching.